हेलो हेलो हेलो। हेलो हेलो। गिव मी एक सेकंड जरा। ओके, आई एम बैक। सो काउंटर को मैं एक कर रहा हूँ, 100 में से 1 सवाल हुआ। वर्ल्ड लैडर 2 का मैंने देख लिया, वीडियो देख ली। वीडियो में उसने वही बोला था बीएफएस वाला, लेकिन उसने फिर ये बताया कि लीड कोड पे एक्सेप्ट नहीं होगा सोल्यूशन। लीड कोड को ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, नहीं होगा। बाकी उस पे हो जाएगा, जैसे गिग्स वगैरह। तो मैंने उसका लीड कोड की एक अलग वीडियो थी, उसमें अलग सोल्यूशन था, वो देखा। फिर उस वो वाला समझा, फिर वो करा, एंड वो एक्सेप्ट हो गया। Okay, तो ये वाला करते हैं। पहले बाय से राइट देखते हैं, क्वेश्चन तो हमने समझ लिया था। बाय पे राइट, तो हमको डीएफएस करना है, राइट। ओके, तो किसी भी एक नोड पे स्टार्ट करता हूँ, अगर वो एक ग्रुप का है तो उसके नेबरिंग सारे बी के होने ही पड़ेंगे, ज़रूरी है। फिर मैं उन सभी नोड्स का करूँगा, उनके नेबरिंग्स ए पे होने चाहिए। एंड अगर कभी भी क्लैश हो गया, राइट, जैसे इसमें क्लैश होगा इधर, जैसे मैं बोलता हूँ इसके सारे नेबर्स बी पे होने चाहिए, तो मैंने बी 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 कर दिया। अब मैं इस बी पे, मैंने बोला इसके सारे नेबर्स ए पे होने चाहिए। ये ए सही है। ये ए पे करने गया, जी जी, जी जी हो गया। और ये ए पे नहीं हो पाया, और हमने बोल दिया भाई तुम तो कुक हो गए। तो एक सेट ए ले लेते हैं, राइट, और एक सेट बी ले लेते हैं। अगर अब मैं डीएफएस स्टार्ट करूँ, एक नोड चाहिए मेरे को, आई डोंट थिंक और कुछ चाहिए, राइट। और सेट, कौन सा करंट सेट है? करंट सेट, करंट सेट क्या है भाई? ये भी चाहिए हमें। ओके, सो मैं बोलूँ, ये जो नोड है मेरे को इस सेट में डालना ही डालना है। इफ करंट सेट इज इक्वल टू ए, ऐसे नहीं करना है मुझे। सेट ए सेट भी इसी में पास कर देता हूँ, है ना। सेट ए कॉमा सेट बी, राइट। तो अगर मैं बोलूँ, अगर मेरे को दूसरे सेट में चेक करना है उसके लिए, तो मेरे को वही करना पड़ेगा। और जो अपना नोड है, एंड अच्छा पहले तो वो कर लेते हैं, एडजेंसी लिस्ट बना लेते हैं। और और आई इन रेंज इन,
इसको वी कैन डू एज डिफॉल्ट डी छोटा, and now I can say adjacency list of I dot append. एक और करना है मेरे को for j in ring और j in graph of I adjacency list. एडजेंसी लिस्ट तो वही तो गिवन है, जीरो कहा जा सकता है, वो कहा जाता है एडजेंसी लिस्ट। यहाँ कह रहा हूँ मैं चीज की तरह। ओके, नोड है मेरे पास, करंट सेट है, तो भाई इसमें जानना है मुझे। तो अगर करंट सेट, अगर ये ए हुआ और मैं देखता हूँ इफ नोड अगर बी में है, सेट बी, रिटर्न फॉल्स नहीं बन सकता। अगर सेट बी में नहीं है तो करंट सेट में ऐड कर दो सीधे। तो क्या कर दो, सेट ए में ऐड कर दो अपना नोड। ओके, अगर मान लो करंट सेट बी था, इफ नोड इन सेट बी, मतलब करंट, इफ करंट सेट इज इक्वल टू बी, राइट। अगर बी था और हमें कोई सेट ए में मिल गया, रिटर्न, रिटर्न फॉल्स। ओके, वरना सेट ए में ऐड कर दो, वरना सेट बी में ऐड कर दो, सेट बी डॉट ऐड। लेकिन विजिटेड का भी मेरे को देखना, लेकिन जैसे 0 1 2 है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने भाई 2 पे चला गया, 2 पे तो तू चला गया। मे बी बी एफ एस विल बी मोर बेटर इसके लिए, क्योंकि हाँ बी एफ एस विल बी मच बेटर, बट आई थिंक डी एफ एस भी हो जाना चाहिए। आई एम गोना ट्राई डी एफ एस से। वरना अगर मैंने बोल दिया कि भाई जाना तो मेरे को पड़ेगा ही, 1 पे गया मैं, 1 को मैंने बी में डाल दिया, राइट। अब मैं क्या करूँगा, ए में डालना था ना, तो ए में डाल दिया, बी में नहीं था, बढ़िया, ए में डाल दिया। नाउ ऐसे फोर और नेक्स्ट नोड इन ग्राफ ऑफ नोड, भेज के तो देख। और अगर डालने से पहले ही था वो इफ नोड इन सेट ए, तब तो सही है ना, देन वी कैन जस्ट रिटर्न ट्रू और आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, राइट।
एंड वरना वी नीड टू ऐड इट सेट ए डॉट ऐड नोड और फिर उसके आगे अब आई हैव टू सी राइट उसके आगे कैसे आगे वी हैव टू सी करंट सेट इफ नॉट डीएफएस ऑफ नेक्स्ट नोड करंट सेट बी होना चाहिए सेट ए एंड सेट बी सेट ए एंड सेट बी मतलब जो भी इसके नेबर्स है वो सेट बी में होने चाहिए अगर कोई भी एक सेट बी में नहीं आ पा रहा है देन रिटर्न फॉल्स रिटर्न फॉल्स ओके ओके अगर ये सारा हो गया और किसी ने भी फोर्स नहीं करा तो वी कैन रिटर्न ट्रू वैसे बी का इफ नोड अगर पहले से ही सेट बी में है वी कैन जस्ट रिटर्न ट्रू वरना सेट बी में डाल दो वरना सेट बी में डाल दिया सेट बी में डालने के बाद क्या होगा set b dot add node for next node in graph of node if not dfs of next node comma a comma set a comma set b return false अगर सारा हो गया we can return true right but अब we need n is equal to len of graphs इतने nodes है and then for each node in range n should I make a visited global visited बना लेते visited is equal to एक set जब भी आएगा तो सबसे पहले visited डॉट ऐड कर दो नोड एंड यहाँ पे if node not in visited मतलब एक नया कंपोनेंट है अब भाई एक अगर नया कंपोनेंट पे आ रहे हो तुम तो एक काम करो if not dfs of जो भी नोड था सेट ए में डाल दो सेट ए वो दोनों एम्प्टी सेट्स हो गए अगर ये कंपोनेंट खुद में नहीं बना सकता तो भाई तुम्हारा जीजी देन वी कैन जस्ट रिटर्न फॉल्स अगर सारे कंपोनेंट्स बढ़िया है तो रिटर्न लेट्स ट्राई टू रन इट ओके लेन ऑफ ग्राफ है ग्राफ और कहीं पे नहीं डाला ग्राफ लग रहा है हक दिया मैंने कुछ ओके नहीं हुआ लेट्स ट्राई टू रन इट ब्रा मेरे को लगा नहीं था आई वुड बी एबल टू डू दिस डैम डैम मैन अब इसमें मैं विजिटेड वाला वो नहीं कर सकता राइट क्योंकि मैं बोलूँगा अगर ये विजिटेड में है तभी जाओ
तो इस केस में क्या होगा, 2 विजिट हो जाएगा। और फिर जब मैं 1 से 2 पे जाने की कोशिश, वो बोलेगा भाई ये तो विजिट है, क्यों जा रहा है। इवन दो मेरे को जानना जरूरी है। राइट, जाना जरूरी है। तो मैं जा रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, जा रहा हूँ। एक बार 2 पे चला गया, मैं घूम फिर के वापस अगर 2 पे आया और वो सही है, अगर वो गलत है तो फॉल्स खत्म। अगर वो सही है तो तुम एक बार तो सही, पहली बार पहुंच चुके हो, तो तुम वापस नहीं जाओगे। अगर तुम दूसरी बार पहुंचे और सही है तो तुम वहीं पे खत्म कर दो। एंड अ लवली सोल्यूशन, थैंक यू। व्हाट द फक इज दिस कलर? डोंट केयर, लेट्स ट्राई दिस। आई मीन वो मीडियम ही सवाल था, इट वाजंट दैट डिफिकल्ट। कलर शेड्यूल 2, व्हाट द फक? साइकिल डिटेक्शन से कलर शेड्यूल आ गया। ओके, देर आर टोटल इतने कोर्सेज है। ओके, 0 से नंबर ऑफ कोर्सेज, ठीक है। यू आर गिवन एन एरे प्री रिक्विजिट। अच्छा, तो एआई लेने से पहले मेरे को ये बीआई लेना ज़रूरी है। टेक कोर्स बीआई फर्स्ट इफ यू वांट टू टेक कोर्स एआई, मतलब बीआई देन एआई। ओके, ऑर्डरिंग बतानी। अगर इम्पॉसिबल है तो फिर टोपोलॉजिकल सॉर्ट का नहीं है ज़्यादा आज क्वेश्चन। और तो मेरे को बिल्कुल नहीं आता है टोपोलॉजिकल सॉर्ट एक्चुअली इसके। टोपोलॉजिकल सॉर्ट्स के वो नहीं दिए इसको, मतलब थ्योरी वाले। आई गेस ये 3 है। मे भी नहीं, आई डोंट नो। ऐसे मेरे को सेगमेंट ट्रीज भी करना है, मेरे को सेगमेंट ट्रीज आते ही नहीं। ओके ठीक है। तो एक बार वैसे होता है जैसे सारे कोर्स करता हूँ मैं। तो पहले प्री रिक्विजिट्स अगर मैं बोलूँ, प्री रिक्विजिट्स राइट, एक कोर्स करने के लिए मेरे को क्या क्या चाहिए। तो एक कोर्स करने के लिए मेरे को ये चाहिए वो चाहिए, सब लिखा तो है। ओके, अच्छा नेवर माइंड। और यू कॉमा वीन प्री, इन प्री रिक्विजिट्स व्हाट वी हैव टू डू इज, जो मेरा जो मेरा जो मेरा यू करने के लिए मेरे को वी चाहिए राइट। प्री रिक्विजिट्स ऑफ यू करने के लिए वी चाहिए। तो यू करने के लिए मेरे को वी चाहिए। ओके, डिफॉल्ट डिक्शनरी। ओके, अब मेरे पास ये है। अब तुम्हारी स्टार्टिंग पॉइंट तो किसी उसी कोर्स से होगी।
उसी कोर्स से होगी जिससे, किससे होगी? उसी कोर्स से होगी जिसमें कोई प्रीरिक्विजिट्स नहीं है, वरना तुम उसे स्टार्ट नहीं कर सकते। सो मान लो बस नोड है, राइट? अब तुम इस नोड से कौन कौन से वो कर सकते हो? अगर तुमने ये कर लिया है तो तुम और क्या कर सकते हो? टोपोलॉजिकल सॉर्ट नहीं है ये चीज। कर सकता है, अगर किसी और तरीके से भी कर सकते हैं, बट अगर मैं डीएफएस लगाना चाहूँ, अगर तुमने ये, सो किसी भी एक नोड पे जाने के लिए आई नीड ऑल द नोड्स, राइट? तो ये दो नोड्स हैं मेरे। टू गेट टू दिस नोड आई नीड टू फर्स्ट रीच हियर देन रीच। वही कोई नोड है जिस पे मेरे को पहुंचने के लिए कुछ नहीं चाहिए, राइट? मान लो इधर आया, देखता हूँ यहाँ से मैं और कोई कोर्स कर सकता हूँ। आई कांट, राइट? क्योंकि क्यों ये विजिटेड में नहीं है बस। सो मैं इसको डाल देता हूँ एंड देन स्टॉप। अब मैं देखता हूँ यहाँ से, अब मैं इधर आ गया, क्या ये कोर्स मैं कर सकता हूँ? क्या ये कोर्स, मैं ये कोर्स करने पे आया, फिर मैं इस कोर्स पे आता हूँ, क्या ये कोर्स मैं कर सकता हूँ? ये वाला नोड मैं विजिट कर चुका हूँ, तो जी हाँ कर सकते हो। सिर्फ इस नोड पे आ गया मैं। अब इस नोड से मैं यहाँ पे, क्या ये नोट कर सकता हूँ? जी, तुम दोनों ये दोनों विजिट कर चुके हो तो कर सकते हो। तो मेरे को दो चीज़ें चाहिए, एक तो प्रीरिक्विजिट एंड आई नीड अ नेक्स्ट ऑल्सो। अगला क्या? 2000 इंटू 2000। तो व्हाट इज द नेक्स्ट चीज़ जो तुम कर सकते हो मे बी? तो यू करने के लिए वी चाहिए, वी करके तुम यू कर सकते हो। तो लेट्स ट्राई समथिंग लाइक दिस। तो सबसे पहले तो तुमने ये कर लिया, यू डिड दिस, राइट? यू डिड दिस। नाउ अब अगला देखो, अगला फॉर नेक्स्ट इन, फॉर नेक्स्ट नोड इन, नेक्स्ट ऑफ नोड। अब ये करके तुम क्या और कर सकते हो? ये कर सकते हो, जो भी कर सकते हो, whatever, राइट? अब मैं बोलूँ, ये जो मेरा नेक्स्ट नोड है इसके प्री रिक्विजिट्स क्या थे?
prerequisites is equal to prerequisites of next node. क्या मैं एक्चुअली इसमें जा सकता हूँ? I want to know this, right? If all of लिस्ट बनाओ previous जो कि था previous in visited और previous in prerequisites, अगर जितने भी prerequisites में तुम्हारे previous थे subjects वो सारे तुम विजिट कर चुके हो, तब तुम जा सकते हो, तो डीएफएस करो नोड का। और ये तब करना है इफ नेक्स्ट नोड नॉट इन विजिटेड, तो ये कर लो एंड देन रिजल्ट डॉट अपेंड वी कैन ऐड द नोड। डीएफएस कर दो नेक्स्ट नोड के लिए। तो अभी जब तुम करोगे डीएफएस नेक्स्ट नोड के लिए तो विजिटेड में ऐड हो जाएगा। राइट, ओके। नाउ नाउ अब हमें क्या करना है, विजिटेड बनाया, रिजल्ट बनाया, मैंने से फॉर आई इन रेंज ऑफ नम कोर्सेज हर एक कोर्स में से जाओ, राइट, और वो करने की कोशिश करो। क्या तुम यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो प्री रिक्विजिट? तो स्टार्ट अगर मैं नहीं भी कर सकता हूँ तो शुड है नहीं, इफ प्री रिक्विजिट्स ऑफ जो मेरा आई है अगर नहीं है ऐसा, इफ नॉट प्री रिक्विजिट्स ऑफ आई मतलब एम्प्टी है, कुछ नहीं है, देन ये तो बहुत अच्छी बात है। लिस्ट या फिर लिस्ट, तो मतलब तुम यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। सो यू डू अ डीएफएस फ्रॉम द नोड एंड ऐसे हर उसके लिए करते जाएगा, राइट। उसके बाद मैं देखूंगा क्या मैं सारे कोर्सेज कर सकता हूँ। लेन ऑफ result is equal to num courses, then I can return the result. Varna I can return, if it is impossible return empty array. Node is not this difference of I. Okay, it works, but I think TLE asks वैसे 2000 into 2000 मे भी नहीं आएगा, नहीं आएगा। Not bad। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? तुम डीएफएस लगा रहे हो हर एक नोड पे जा सकते हो, राइट, तो ओ ऑफ एन। अब हर एक नोड पे तुम नेक्स्ट नोड देख रहे हो एंड उसके लिए तुम ये उसके जो प्री रिक्विजिट्स है वो तुम बार बार चेक कर। सो नोड के कितने प्री रिक्विजिट्स हो सकते हैं? हर एक नोड के हो सकते हैं सारे ही हो, सारे ही हो। So that is another O of n. So this is an n square का solution which is 2000 into 2000 not much। दो 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 चार, एक दो तीन, एक दो तीन, 10⁻⁶ not much। क्या इसको ऑप्टिमाइज किया जा सकता है? आई डोंट नो। अब टोपोलॉजिकल सॉर्ट में तो कर सकते हैं। as I said
टोपोलॉजिकल सॉर्ट का ये मेनली सवाल है। Equivalent to finding out the topological and the directory. If a cycle exists, no topological ordering exists. मतलब टोपोलॉजिकल सॉर्ट कर दे एंड अगर कोई साइकिल मिली एंड अगर टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग में कोई भी साइकिल मिली तो तुम कुक दो, राइट। लेकिन अगर टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग में कोई भी साइकिल नहीं मिली तो रिटर्न कर दो। एंड लेकिन इसका वो क्या है सोल्यूशन? अबे तो इसकी मार्क में क्या भाग बोल रहा हो, क्यों हो रहा है, लंड घुस रहा है क्या इसकी माँ में? छूतिया। इसकी भी माँ चुद रही है इससे। खान Sargo. I don't know the fuck is Khan Sargo. इन डिग्री कुछ निकाल रहा हूँ। I'm quite sure इसको इन में कर सकते हैं। Like I'm 100% sure. Complexity का है V plus E. V number of vertices मेरा V square है, right? It is not good. Right. Oh. Now अब क्या करना है इसको N में? I don't know how to do topological side. I'm not. तो उसकी मेरे को वीडियो देखनी पड़ेगी। Because I actually have no sort कैसे करते हैं। चले सर इसकी वीडियो देखें। ये तो साइकिल का ही कर रहा है, नॉट इन एग्जैक्टली जो क्वेश्चन इसने दिया है कोर्स शेड्यूल, राइट। सो एक बार टोपोलॉजिकल सॉर्ट की वीडियो देखते हैं। हम देखेंगे शुड आई एक सवाल, ये दूसरा सवाल तो हो गया एंड ये तीसरा, दो ही लेते हैं अभी, तीसरा नहीं लूंगा। टोपोलॉजिकल सॉर्ट से करने के बाद ऑफ एंड में जब ऑप्टिमाइज करेंगे तब करेंगे, बट आई नीड टू गो फॉर अ वॉशरूम। ओके, आई एम गोना बी बैक वॉशरूम ब्रेक में।
Okay, my bad guys, I'm back. And अब हम ज़रा इसको देखते हैं टोपोलॉजिकल सॉर्ट कैसे होती है. Hey everyone, welcome back to the channel. I hope you guys are doing extremely well. Yep. So, in this video, we are going to learn about topological sorting, and we're going to solve this using the DFS algorithm, which is the depth first search. Okay. Now, what is topological sorting? In order to define it, I can say it only exists on DAG, which is directed acyclic graph. That means any directed graph which does not have a cycle. Why? I will tell you that. So basically, the definition states any linear ordering of vertices, means these nodes, any of the linear ordering, such that if there is an edge between U and V, such that there is an edge between U and V, U always appears V in that ordering. U always appears before V in that ordering. So this is the particular DAG. So let me write down the edges that we have. I think we have an edge from 5 to 0. We have an edge from 4 to 0. We have an edge from 5 to 2. We have an edge from 2 to 3. We have an edge from 3 to 1. And we have an edge from 4 to 1. Yeah. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. We have all the 6 edges. So this can be a possible linear ordering. Why? Let me tell you that. 5 to 0. 5 appears before 0. 4 to 0. 4 appears before 0. Okay. 5 to 2. 5 appears before 2. 2 to 3. 2 appears before 3. 3 to 1, 3 appears before 1. Yeah. 4 to 1, 4 appears before 1. So thereby, this is a valid 5 appears before 0. Multiple, good enough. Now coming across, we will understand how to find it, but why only in directed acyclic graph? Why? So first, let's understand why in directed graph. So what does the definition state? If there's an edge between U and V, U appears before V. So if you take undirected graph and you say that there is an edge between 1 to 2, it actually means there is an edge between 1 to 2 and there's an edge between 2 to 1. So how can you write the ordering such that 1 is before 2 and 2 is also before 1? That is not practically possible. Thereby, the directed graphs are only possible. Now, why cyclic means no cycle, Why is that? Now, imagine if you have a cycle in a directed graph 1 to 2, 2 to 3, 3 to 1. Okay, so what I'm stating is 1 is having edge to 2, which means 1 should be before 2 in that ordering, which means 3 should be before 1 in that ordering. That is not possible. Why? Because there is a cyclic dependence that everyone follows that. So thereby acyclic and graph is. So I hope you got the reason why is topological sorting valid. So the reason this particular always do, as you know that, right? We always have this particular stuff for components, and that is the same thing we will be following over here as well. So over here, how many nodes do we have? We have 5 nodes. So run till 5, and we will say if not visited. Yes, very, very important. If not visited of I, then we will call the DFS for I. Yes, that is how we will do it. And I'll explain you slowly. So this is what we will take, and we will always declare a visited array. So let's quickly declare the visited array. So probably we can do that over here. So we have declared the visited array, and make sure everything is marked as 0 initially. Okay. Marked as 0 initially. Now let's quickly start off. What is the value of I? The value of I is 0 initially. Is that visited? No. So what you do is, you start the DFS call from 0. Remember this. You start the DFS call from 0. At the same time, just declare a stack. Yes, declare a stack. Now what is a stack? It is a last in first out operation data structure. Last in first out operation data structure. If you don't know, please read about stack. So DFS of 0 is there. So what you do is, you say, okay, this guy is visited. Does 0 have any adjacent nodes? No. Nope. So the DFS will not call any further DFS, and it will go back. But remember, before going back, take the 0 and put it into the stack. Before going back, take the 0 and put it into the stack. Okay. Done. So the DFS for 0 is completed. Next, I'll tell you the intuition going forward, don't worry. Next is 1. So again, you write the same thing, DFS of 1. The first thing you do is you mark it as visited. Does 1 have any adjacent nodes? No. So there will be no further DFS calls. No further DFS calls. So before going back, put this into the stack. So you put this into the stack, and now you'll go back. So the DFS is completed. Next, it comes for 2. So what happens is, you call the DFS for 2, you mark it as visited. Now 2 has an adjacent node, so you go and call it for 3. Now what you do is, you mark for 3 as visited as well. Now does 3 have an adjacent node? It checks that 3 has an adjacent node 1, but if we carefully see, we cannot call for DFS of 1. Why? Because it is already visited. Yes, because it is already visited. So thereby, what we will do is, we will be like, okay, it is already visited. So let's quickly just not call any further DFS calls and go back. But before going back, take that 3 and put it in. Now we go over here, no further DFS calls, go back. Before going back, put that into the stack. So we have put that into the stack, and we are now done. Right? Now, the value will be 3. 3 is already visited. Next value will be 4, and that is not visited. So what we will do is, we will go and check out for 4. Now for 4, we will mark it as visited, and we will check if there are adjacent nodes. 0 is visited, 1 is visited. So both of the adjacent nodes are visited. So there will be no further DFS calls. So you go back. Now what you do is, you take this 4 and you put it into the stack. You take this 4 and you put it into the stack, right? So next, it will be 5. And now next the DFS call will be happening for 5. So you'll mark it as visited. Does 5 have any adjacent nodes? Yes. 0 already visited. 2 already visited. So thereby, no further DFS calls for 5, and you'll put 5 into the stack. Done. Now I can say that the DFS call is over. Once the DFS call is over, whatever you stored in the stack, take it one by one. The first thing that you take out is 5. Next thing you take out is 4. Next thing 2. Next thing 3. Next thing 1. Next thing 0. This is one of the linear orderings. Yes,
This is one of the linear orderings that you can get. Very, very important. This is one of the linear orderings that you can get, and this is what is known as topological sort of this particular graph. I hope that does make sense. Yep. Now you must be thinking about, hey Striver, but what is the intuition behind this algorithm? The algorithm looks pretty simple, but what is the intuition? I'll tell you the intuition, but let's first write the code, ये absorb the अगर code, तुम absorb उसके the logic, नीचे and then I'll DFS tell you जा the intuition. सकते The हो तो intuition वो is very पहले small. Don't worry आएगा. about that. So guys, as usual, I'll write the C++ code on the right, and you can find the Java code on the left. Okay, Okay, so इस सवाल में how can I implement it? So पहले मान लो adjacency list we will make. Then we will look for cycle in this graph. Okay. अगर cycle मिल गई we just return empty. अगर cycle नहीं मिलती we do the topological sort and return. Right. Okay, but there was one more thing. How do I detect a goddamn cycle? क्योंकि इसमें क्या कोई साइकिल है? 5 से 2 3 1 can't go 1 0 can't go. I don't think so. इसमें this is acyclic, right? But हमें इसमें आ रहा है, क्या आ रहा है? हम visited पे वापस जाने की कोशिश कर रहे हैं, which is just wrong. मैं सीधे चेक करूँ कि visited पे वापस पहुँच रहे हो. That is not cool, my god. अच्छा, क्योंकि इसमें components अलग अलग है ना. Now I know. It had different components. Okay. For these different components, like technically 5 0, this is one component. Okay, 3 1 also. This is not technically a component, I will say. This is my component थोड़ा मुश्किल है. Okay, but what we can do is we cannot just use a global visited. Undirected में कर सकते हैं because उसमें एक component है तो उसमें तुम you can go from anywhere to anywhere. So उसमें एक वो चलेगा global visited. So we make a Jitsi list. We say for u comma v in prerequisites. Okay, so u पे जाने के लिए हमको v लेना पड़ेगा. That means from v we go to u. Adjacency list of from v we can go to u. Right? अपना ग्राफ बन गया. Now I can say define DFS. We give it a node and we give it a path, right? Okay. Instead of path we can say current user, whatever you want to say, right? So what I say visited dot add a node, right? So add this node in the visited. Then we say okay man, you आपने ये तो कर लिया बिल्कुल. तो आपको एक और चीज़ करनी है और वो क्या है, क्या करना है आपको? टेक्निकली स्टैक अगर छोड़ोगे से साइकिल डिटेक्शन कर देखते हैं. देन आई कैन से ओके आपने विजिट तो कर लिया बट फॉर नेक्स्ट नोड इन adjacency list of current node, if next node
नॉट इन एंड देन करंट में भी ऐड कर दो। अगर जो नेक्स्ट नोड है नोड नहीं है विजिटेड में तो उसको जाके विजिट कर लो। डीएफएस ऑफ नेक्स्ट नोड कॉमा करंट सेम, राइट। लेकिन एलिफ जो मेरा नेक्स्ट नोड है वो करंट पाथ में हो, दैट मीन्स साइकिल है, दैट मीन्स वी नीड टू रिटर्न ट्रू, देयर इज अ साइकिल, देयर इज अ गॉडडैम साइकिल। देयर इज अ गॉडडैम साइकिल। लेकिन अगर सारा हो गया है ना, देन वी कैन रिटर्न की ना अभी कोई साइकिल नहीं है। आई थिंक ऐसा कोई हम करेगा, बट इस क्वेश्चन में वी कैन ऐड स्टैक इज इक्वल टू जो भी एम्प्टी, राइट। तो किसी भी नोड से विजिट करके आए आप, स्टैक डॉट अपेंड नोड, राइट। किसी भी उल्टा कर देते रिटर्न ट्रू, दैट मीन्स बन सकता है रिटर्न से, तो ट्रू से पहले ओके यू कैन डू दिस, राइट। एंड देन वी कैन जस्ट रिटर्न जो उसने रिटर्न करा। अगर उसके आगे साइकिल कभी बन रही है, साइकिल बन रही है तो जी जी। अगर नेक्स्ट नोड करंट में हो गया तो फॉल्स है। अगर सारा हो गया ट्रू रिटर्न कर दो, राइट। And now I can say visited is equal to set x. Now I can say for I in range num courses, for I in range num courses. Hey man, hey man, can I ask you something? If I not in visited, then you can say DFS करो। अगर इसने false दे दिया, if not DFS of I comma x set, set में क्या आएगा, करंट I नहीं हो तो डाल देगा एक एम्प्टी सेट, राइट। अगर तुम्हारा ऐसा है कि तुमने DFS करो और फॉल्स बोल दिया, मतलब तुम नहीं बना सकते ऑर्डरिंग, तो वी कैन जस्ट रिटर्न एम्प्टी, एम्प्टी एरर। लेकिन अगर तुमने सारा कर दिया, मतलब सारे विजिट विजिट कर करके तुम्हारा किसी में अटका नहीं, ठीक है, नहीं अटका, तो ये तब भी हो सकता है। देन वी कैन रिटर्न स्टैक और उसको रिवर्स करके पॉप अप करेगा तो रिवर्स हो गया।
कुछ ऐसा कि एरर 0 डिफॉल्ट। ओके, नंबर ऑफ कोर्सेज होगा। ओके, रॉन्ग आंसर। लेट मी प्रिंट एक बार एजेंसी लिस्ट क्या है। लेट्स सी, 0 से 1 जा सकते हैं। दिस करेक्ट। तो मैं DFS लगाता हूँ 0 के लिए। राइट, मैंने बोला 0 के लिए चल। 0 DFS करा, विजिट में डाल दिया, करंट में डाल दिया। अब नेक्स्ट नोट पे गया 1 1 राइट 1। सो 1 में गया, 1 में गया, स्टैक डॉट अपेंड 1 राइट। उसके बाद 1 के बाद और कुछ नहीं था, वापस में 0 पे आया। 0 पे मैं देखा, आई शुड टेक्निकली डू स्टैक डॉट अपेंड, तो क्यों नहीं कर रहा। 0 अपेंड क्यों नहीं हुआ स्टैक में। अच्छा, सिर्फ 2 केसेस है। दोनों केसेस में आई एम रिटर्निंग समथिंग राइट। सो अगर ये केस है, आई कैन नॉट रिटर्न एनीथिंग, आई नीड टू डू द DFS राइट। अगर ये नहीं आया राइट, देन आई कैन रिटर्न फॉल्स। रिटर्न फॉल्स। तो मैं बोल रहा हूँ भाई DFS करने की कोशिश कर नेक्स्ट नोट से। बोल दिया कि नहीं, अब मैंने वो भाई साइकिल बन के नहीं हो रहा, तो रेट फॉल्स कर दे रिटर्न। अगर ट्रू भी होता रहता हो, इट वॉज जस्ट रिटर्निंग, नॉट एडिंग इन द स्टैक। ओके, तो अब इसमें कुछ पग 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 हो रहा है, पगू पगू। ओके, ओके। सब इसमें क्या कर रहे हैं हम। 0 0। लेट्स सी क्या है मेरी एजेंसी लिस्ट। 0 से 1 एंड 2 जा सकते हैं। ओके, 1 से 3 एंड 2 से 3, दिस इज करेक्ट। तो कहीं ये फॉल्स रिटर्न कर रहा है, इसका मतलब। ट्रू फॉल्स रिटर्न कर रहा है। लेट्स सी, प्रिंट करें, जब भी फॉल्स होगा रिटर्न। लेट्स सी करंट क्या था, नोड एंड देन करंट। I can remove this here, and then I can say if node and current
रिटर्न फॉल्स नहीं, तो अगर विजिट नहीं करा है अभी तक अगर विजिट नहीं करा है, क्या तुमने अभी तक विजिट करा है? नो, आई हैव नॉट विजिटेड अभी तक। विजिट करके आओ। सेम ही आना चाहिए। ओके, अब दोनों ही गलत आ रहे हैं समा। हम्म, 0। अच्छा, मैं पहले ही डाल रहा हूँ। आई नीड टू डू इज, अच्छा मैं तो पहले ही डाल रहा था, इसलिए पहले भी आंसर वो गलत आ रहा होगा, वरना करंट में डाल दिया। अब पहली बार तुम इस पाथ में आए हो, सो इस पाथ से जो भी नई चीज़ है वो डालने की कोशिश करो। ओके, दिस वर्क्स, लेट्स ट्राई एंड सबमिट। ओके, 0110 साइकिल है पूरी की पूरी। इस नेक्स्ट, अगर मैं सीधे DFS कर रहा हूँ कि भाई साइकिल वाइकिल होगी तो आगे पता चलेगा, और विजिटेड ग्लोबल है इस चीज़ के लिए। प्रिंट नोड कॉमा करंट, लेट्स सी कहाँ पे फॉल्स आ रहा है। 3 पे। तो अपना ग्राफ क्या है? 0 से 1 जा सकते हैं, 0 से 1, 0 से 2 भी जा सकते हैं, 1 से 3, एंड देन 2 से 3। तो देर इज नो साइकिल। सो मैं 3 पे जब आ रहा हूँ, इट इज ऑलरेडी इन करंट। अच्छा, मतलब 0 1 से मैं करंट पे आ गया, अब मैं 0 2 3 से करंट पे जाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, सो इसमें ये नहीं होगा। व्हाट वी हैव टू डू इज, मेरे को हटाना भी है। करंट डॉट एड नोड, एंड देन उसके बाद करंट डॉट रिमूव नोड, राइट। So you add it, then check the DFS, then you remove the node.
तो मैं 3 पे आया पहली बार। 3 तो करंट में जाएगा भी नहीं, बट मान लो मैं 2 पे आया। 2 पे आया। मान लो ऐसा भी कुछ होता, ऐसा तो नहीं है। तो मैं 2 पे आया। 2 से मैं 3 पे गया। फिर मैं 1 पे आया। आई डोंट नो द फक आई एम सेइंग, बट इसमें एक बार 3 पे एक बार मैं पहुंच जाऊंगा। आई थिंक दिस शुड वर्क। maybe maybe it does not work। 0T313, ओके। सो एक और चीज़ मैं सोच रहा था, इंस्टेड ऑफ पुटिंग दिस हेयर, अगर नहीं है तो यहाँ पे ही ऐड कर देते हैं, क्योंकि करंट में तो अभी आ गया राइट। अब जब तक यहाँ से डीएफएस हो रहा है तब तक ये करंट में रहेगा पूरी लूप तक, और उसके बाद करंट से हटा दो। सबसे पहले ये तो विजिटेड होगा राइट। अगर ये नोड इस पाथ में मेरे को मिल चुका है तब तो जी जी, राइट जी जी। अगर नहीं मिला है तो अब डाल दिया पाथ में, और अब इससे आगे जाओ। आगे जब नहीं जा सकते, खत्म हो गया तो रिमूव कर दो। ओके। तो अब 3 दो बार आ रहा है, दैट इज प्रॉब्लम। अच्छा, अब मैं 3 पे 2 बार पहुंच रहा हूँ राइट। एक बार एक बार इस पाथ से, एक बार उस पाथ से। तो यहाँ पे आई कैन से आई instead of stack dot append, I'm gonna only append if visited। तो मैं पहले ही डाल रहा हूँ, अब ये दिक्कत है। तो अगर मैं इसको यहाँ से हटाऊँ, and then I say if visited of, if node not in visited, तो स्टैक में करो और विजिटेड में डाल दीजिए। एंड देन विजिटेड में डाल दो। लेट्स सी अगर ये काम करेगा। ओके, इट डज वर्क। एंड यप, O of n का solution, it is a bit worse। Holy hell, let me see it। Time complexity for lead code 210। total v plus e right। v plus e, and let's see इसका for this one। e into v।
यप यप यप। दिस इज द मोर ऑप्टिमाइज, बट ये ज़्यादा टाइम ले रहा है। मैंने अच्छे से लिखा नहीं है, मे बी बिकॉज माई कोड इज सो एस। वरना करंट को ऐड कर दो एंड देन करंट को रिमूव कर दो। I mean, I'm gonna count this. I did it. I did this shit. But I actually want to see this इसकी वीडियो, क्योंकि आई एम नॉट, मैंने एग्जैक्टली जो कोड लिखा है, बट ये मैं बाद में देखूंगा, अभी स्ट्रीम का टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। सो ये एक सवाल और बचा है। ओके, देख लो बहन जो सारी ईमेल आईडी में फर्क पड़ता नहीं। कुछ तो बवासी ही रही है। ओके, given a 2D Boolean matrix, grid size and integer, you have to find the number of distinct islands where a group of connected ones form an island. What do you mean distinct? Is not equal to one another, इसका क्या मतलब है? एक तो इसे इससे गंदा they could not have made the UI UX। अब इसे मैं क्या लंड समझूंगा? एक ये एल वाला आइलैंड, ये स्क्वायर का आइलैंड है और एक स्क्वायर है, तो इनके लिए दीज आर द सेम आइलैंड। डैम, होली फक। दैट इज क्रेजी। अब एक, वन, दो, तीन। अब ये दोनों भी तो एक आइलैंड ये है, तीन कैसे आ रहे हैं? तो अब चार आइलैंड, तो एक, दो, तीन, चार। सो ये तो तीन सेम है, दो ही डिस्टिंक्ट हुए। थोड़े चूतिया वूतिया है क्या ये? एन 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 वन वन, क्या इसमें इसने बेटर से लिखा है? इसने तो सर नंबर ऑफ आइलैंड्स है। नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट आइलैंड्स वन ही है, अगर मैं देख। इज दैट फ्री एन? माँ का बोल रहा करते हो? अच्छा, ओके, ये भी नहीं। तो इनका इनका इतना टट्टी है इनका डिस्कशन। इतना टट्टी सवाल डिस्कशन, सबके सब तो आंसर लिखते हैं डिस्कशन में। मतलब सारे में सारे के सारे आइलैंड्स तो निकाल सकता हूँ। ये तुम्हें को समझ में नहीं आ रहा कि रोटेटेड और रिफ्लेक्टेड, तो ये रिफ्लेक्टेड है, ये भी रिफ्लेक्टेड है। तो ये एन ये इस एक्सेस पे करोगे तो रिफ्लेक्टेड है, ये एन ये इस एक्सेस पे करोगे तो रिफ्लेक्टेड है। ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो ये तीनों इक्वल है। आई गॉट नो क्लू व्हाट द फक इज दिस शिट। अच्छा नेवर माइंड, यहाँ पे एक और वन है।
तो ये एंड ये आइलैंड अगर सेम हो तो ये एंड ये नहीं है। सो 1 1 1 1 1 1, इसको मैं रोटेट करूँ 1 1 1, ये बनेगा। देन उसके बाद 1 1 1। तो ये तो रोटेट करके बन गया। या फिर इसको 1 1 1, and then I need to rotate it। सेलेक्ट किधर है पेंट में? मैं ज़रा ब्राउज़र वाले में नहीं कर रहा, किसी और में कर रहा हूँ, मतलब उसमें। हाउ द फक डू आई रोटेट इट? I have no clue what do they mean by this thing। I'm gonna see इसमें क्या करा है। इसने नंबर ऑफ आइलैंड्स ही बोले, नंबर ऑफ कनेक्टेड कॉम्पोनेंट्स। All the 8 direction connectivities are मेरे को सवाल समझा दो। सवाल समझा दो। अच्छा, तो 0 0 लिया है, तो फिर उसके रिलेटिव 0 1 हो गया। सो समझे? पहले सारे नंबर ऑफ आइलैंड्स ले लो। तो तुम्हारे पास हर एक आइलैंड का टॉप लेफ्ट होगा, क्योंकि दैट्स हाउ यू आर आइटरेटिंग, राइट? तो किसी भी आइलैंड का पहले ये आएगा तो ये पूरा आइलैंड, फिर उसके बाद ये आएगा ये पूरा आइलैंड, राइट? एंड देन यू सी टॉप लेफ्ट को तुम 0 0 मान लो, अब बाकियों को उसके रिलेटिवली नए कोऑर्डिनेट्स दो, एंड उसमें फिर देखो कितने हैं। ओके, आई एम नॉट गोना डू दिस राइट नाउ, दिस इज काइंड ऑफ शिट सवाल। मूड खराब हो गया मेरा ये सवाल देख के। सो आई एम गोना व्हाट इज खान सर, आई डोंट नो। का सवाल है या नहीं है? लीड कोड का मेरे को है। GFG प्रैक्टिस। टोपोलॉजिकल सॉर्ट करना है, राइट? तो ये तो कर सकते हैं, आई कैन जस्ट से, तो मेरे को गिवन है DAG है,
So I can say define a DFS for the node, right? And एक stack चाहिए होगा मुझे. Then I can say visited dot add node. Then edges कैसे करना है इस फॉर्म में. ओके सो पहले एजेंसी लिस्ट बनानी पड़ेगी. एजेंसी लिस्ट इज इक्वल टू default dictionary of list and need to import it पहले. Import default dictionary and then I can say for u comma v images agency list of u dot append v, right? तो visited में कर दो add node. अब करो for next node in adjacency list of current node. If next node not in visited, if next node not in visited तो visited में डाल दो. Visited dot add next node and then we can say visited not visited. Then we can go for a DFS from the node, next node से sorry. And जब मेरा ये पूरा DFS हो जाए I can go stack dot append node and now for I in range v visited बना लेता हूँ पहले. Visited is equal to set if I not in visited we can add it and then do a DFS from I. Okay ये करते रहो and now I can just return stack of reverse order में. Let's see. Let's try this thing. Okay, lovely. अब कहाँ से एल्गोरिथम क्या क्वेश्चन क्या है? तो मेरे को टोपोलॉजिकल सॉर्ट ही करना है. ओके सो मतलब टोपोलॉजिकल सॉर्ट करने का कुछ तरीका है आई थिंक खान सर को. सो इसी में करेंगे बट नाउ वी हैव टू सी ये खान सा एल्गोरिथम है क्या, करते कैसे. लेट्स लर्न. Hey everyone, welcome back to the channel. I hope you guys are doing extremely well. So in this video, we're going to learn about topological sorting and we are going to use the BFS algorithm. We have done the DFS algorithm in the previous video and this algorithm is famously known as the Khan's algorithm. अगर BFS से मैंने टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग की तो Khan, whatever you can call it. So what is topological sorting? So it's basically a linear ordering of vertices such that if there is an edge between U and V, U always appears before V in that ordering. So let me give you an example. So if I write 5, 4, then I can write something like 0, ये तो पता है. then 3, 1. So these are all the 6 edges of that given graph. Okay, so we have 6 edges. Let's check out 5, 0. So if you see 5, 0, 5 appears before 0. So this is perfect. 4, 0, 4 appears before 0. And that is what the lining stated. 5, 2, 5 appears before 2. 4, 1, 4 appears before 1. 2, 3, 2 appears before 3. 3, 1, 3 appears before 1. Even I can have something like 4, 5, 2, 3, 1, 0. This is also a valid linear ordering. Let's check it out. 5, 0, 5 appears before 0.
4 0, 4 appears before 0. 5 2, 5 appears before 2. 4 1, 4 appears before 1. 2 3, 2 appears before 3. 3 1, 3 appears before 1. So there can be multiple such linear ordering of vertices. As long as all the edges satisfy this particular condition, I can say any of that linear ordering to be a topological sort. Now our task is to print any such topological sort. So remember one thing, topological sort or topo sort is only valid in DAGs. This is only valid in DAGs. What is directed acyclic to 2. So this is an undirected edge between a node 1 and between a node 2. So if you carefully see, this is from 1 to 2 and from 2 to 1. So in the linear ordering, you can't have such a linear ordering such an undirected edge between 3 to 1. So what I'm saying is, in the linear ordering, 1 should be before 2. Thereby, you cannot have 1 at both the places. You cannot have 1 before 3, or you can. So directed acyclic graph is where a topo sort is valid. Now, previously, we have solved topological sorting using the DFS. Since we are using BFS over here, we know what we need. We need a queue data structure. This is nothing but the first in first out data structure. This is the particular. क्या टोपोलॉजिकल सॉर्ट डुप्लीकेट्स के साथ कर सकते हैं? कैन वी डू टोपोलॉजिकल सॉर्ट विद ग्राफ्स with duplicate values? Adjacency list. And this is a new thing that we will introduce because it is not exactly the BFS algorithm, a slightly modified version of it. So we're going to use an in-degree. What is the definition of an in-degree? Number of incoming edges to a node. Yes, very important. Number of incoming edges to a node. I've already taught you about this in the first video. So if I ask you for 0, what is the number of incoming edges? Can I say it is 2? So I will say the number of incoming edges for 0 is 2. For 1, how much is it? It is again 2 because there are 2 incoming edges to 1 as well. So 2. Now, if I ask you what is for 3, there's just 1 incoming edge. This is outgoing. So in degree is just 1. So this is, sorry, for 2, it is actually 1 because there is 1. For 3 also, there is 1. And now for 4, are there any incoming edges? Do you see any incoming edges? No. So you'll be like 0. And for 5, are there any incoming edges? No. So you'll be like 0. Now, what was the definition of topo sort? If there is an edge between U and V, U appears before V in the linear ordering. That was the definition of topo sort, right? So can I say, since 5 and 4 do not have any of the incoming edges, so you can place 5 or 4 at the starting. You can place either 5 or 4 at the starting of your linear ordering because there has to be no one before 5 because there is the in degree is 0. There is no one before 5 or 4. You can place them at the starting. So what you do is you say, okay, initially there will always be a node. There will a minimum of one node whose in degree is 0. So the step 1 is very clear. Insert all nodes with in degree 0. With in degree 0. So can I say I'll insert 4 and 5? You can do 5 and 4 as well. So I've inserted 4 and 5. Okay. Now the ordering can have 4 and 5. Now 4 and 5 would be having the incoming edge to someone, right? So they were getting into someone. So what I'll do is I'll take 4 out at first. I took 4 out. Now 4 was अगर मेरा in degree कहीं 0 ही नहीं होगा, मतलब उसका मतलब है कि साइकिल है. I think so. To someone, let's see. 4 was into 0 and 4 was into 1. So I'll be like, let's take it off because I already have 4 before it. So I've placed in my ordering 4. So I have 4 before it. So from 0, take out 4. So the in degree will reduce to 1. And from 1 also take out 4. So the in degree will reduce to 1. So what I did was I said, let's take it out. Yes, let's take it out. So kind of, you can say I removed these edges. I kind of removed these edges. I'm saying take them out because they're no more into consideration. Okay, perfect. So I've taken them out, right? After taking 4 out, is the 0 having an in degree 0? No, there are still a lot of edges which are into it and are not yet in my direction or in my linear ordering. Okay, fine. So I've done the work for 4. Next, take out 5. So 5 will be in my linear ordering now. Like 5, if you see, is entering 2 and is entering 0. So if I take it out from 0, the in degree will become 0. So the in degree of 0 now becomes 0. So you can take that 0 and put it into the queue. And from 2 also you'll take it out. So the in degree of 2 will also become 0. So you can put that out as well. Perfect. Now, can I say, since you took 4 and 5 out, 4 and 5 was already entering 0. Thereby the in degree becomes 0. So you're very sure that you have placed 4 and 5 before, right? Now, when you take the next element out of the queue, it is 0. And you can place that into the linear ordering. Because it is now an in degree of 0 because 4 and 5 have been taken out. Got it? Perfect. For 0, you will see, does it have any anywhere, any adjacent nodes? No. So nothing to be done. Next, you take out 2. Where is 2? Heading 2. 2 is heading to 3. The adjacent node of 2 is 3. So you reduce the in degree of 3 by 1 and become 0. So now you can take 3 and put it into the queue.
Perfect. Next, you take out 3. Now you have 3. Now 3 is saying, who am I? Like, you can take out 3, and 3 was getting into 1. So 1 will now reduce its integrity to 0. So now you can take out 1. Perfect. You can remove it. Suddenly this integrity will become 0, and this will be done. So apparently now you have 1. So you can take out 1. And over here you can place out 1. So does 1 have any adjacent node? No. So I can say at the end of the day, we have 450231 as a valid topo sort. So what I did was super simple. I insert all the nodes with integrity 0, take them out of the queue, and just remove the adjacent, like just reduce the integrity of the adjacent nodes. And if the adjacent nodes have the integrity 0, I see them. You have your guys set before, so you can now go to the queue because you will be a part of the topo sort. Got it? So quite simple. Quick question: how do you figure out the integrity? How do you figure out the integrity? Very simple. If I'm saying 2 is having an adjacent node to 3, which means 2 is directed to 3. So can I say the integrity of 3 will increase by +1? So what I do is I traverse in the adjacent node, and whatever is there, I say integrity of 3 can do a plus. If there is 0, I can say ओके सो पहले मैंने कर लिया एडजेंसी लिस्ट बना ली, राइट? नाउ आई से हे ब्रदर, मेरे को इंडिकेट हर एक उसकी, सो इन डिग्री to 0 into v, okay, for node in, एक सेकेंड, ओके माय बैड, बकवास स्पैम कॉल आ रहा था. ओके so we say for node in, and then for next node in, adjacency list of node in degree of this next node. We have a new way to reach this facility one. अभी किसके equal है? This will be equal to the number of edges. And how many edges do we have? 10 raised to 5 max to max. Okay. So I was in degree here. Now I can एक बार start करो for I in range V. If in degree V अगर ये 0 हुई, we need to add it. तो एक Q बना लेते हैं पहले. Q is equal to D. Then Q dot append. Right? Yep. Now I can say while Q, not traverse, उसके neighboring foot node is equal to Q dot poplar and result ले लो. तो पॉप करने के बाद result dot append no. ओके, Q में वही आएगा जिसकी डिग्री 0 है. Now I say for next node in adjacency list of अपना this वाला node, right? इसका next node एक कम हो जाएगा in degree of this next node minus L to 1, right? And then I say एक सेकंड अब बिल बच गई.
ओके, तो हम ये करेंगे, अगर ये इन डिग्री ऑफ दिस नेक्स्ट नोड अगर ये 0 हो जाए, then we can add it in the queue, and I think this is it, and then we can return result as usual. Okay, okay, let's see. Okay, pretty easy. Really easy, can't available. So technically कितने पे हूँ मैं? 3, राइट? तो 2 और हो गए, 5 हो गए. It's kind of cheating, but I'm gonna say cycle detection in directed graph. तो इसमें टोपोलॉजिकल सॉर्ट का क्या है? प्रैक्टिस नहीं है? अच्छा, ओके ओके ओके. अच्छा, अगर मेरे को सीधे साइकिल निकालने को बोल दिया, पहले बोला डीएफएस से निकालो साइकिल. So I'm gonna say define a DFS node and then current, right? So if node and current return true, cycle है. वरना for next node in node agency list बनाओ पहले. From collections import default dictionary. Agency list is equal to default dictionary of list for u comma v edges. Agency list of u dot append with for next node and agency list of u, sorry not u but node. अब क्या करेंगे हम? Just do what if
DFS of next node, comma current. We can say current dot add node. So return true. अगर DFS है उस पाथ में तो return true. तो वहीं पे रुक जाओ, वरना ये सारा करते रहो current dot remove node. Current dot remove node, and then we can return false. Yep. अगर ये पूरी हो गई तो इससे पहले एक और चीज़ कर लेते हैं. ये विजिट हो चुका है, विजिटेड dot add a node, return false. Then I can say for I in ring v, if I not in visited एक बना लो. यप. सो अगर विजिट नहीं करा है तो DFS करो, एंड अगर इसमें ट्रू आ गया कहीं पे भी, वी कैन रिटर्न ट्रू है. वरना सारा पूरा DFS हो गया, कहीं साइकिल नहीं मिली, रिटर्न फॉल्स. लेट्स सी. ओके, गुड शिट. अब अगर मेरे को ये बोला जाए BFS से करो, BFS. हाँ, BFS के लिए मेरे को पूरा पाथ चाहिए. अनडायरेक्टेड में तो इजी था, अगर तुम विजिटेड पे वापस आ गए तो वो, लेकिन इसमें इतना आसान नहीं है. इसमें यू नीड द एग्जैक्ट पाथ.
तो क्या किया जाए? You start the BFS. अब DFS में करंट पाथ्स को ट्रैक रखना बहुत ही एफिशिएंट है। तुमको बस एक O ऑफ n की वो चाहिए, लेकिन इसमें नहीं चलेगा वो। तो थोड़ा सा लेकिन BFS नहीं हुआ, DFS हुआ। हाँ, I don't know. To have something like 0, 1, 3, 2. This is not a cycle. Not a cycle. ये 0 पे था। एक तो है कि पाथ रखो, 0 पे था, फिर 0 1 पे आ गया, फिर 0 2 पे आ गया, राइट? ओके, फिर 0 1 पे उठाया, 1 उठाया, राइट पे गया मैं। राइट, फिर 0 1 3 आ गया, 0 1 3, फिर आ गया 0 2 3, और फिर BFS खत्म हो गया। दिस इज अ वेरी ब्रूट फोर्स तरीका, आई कैन डू दिस। बट आई एम अफ्रेड इसमें TLE वगैरह आ जाए, क्योंकि तुम्हारी बहुत बड़ी बड़ी पाथ बन सकती है, राइट? मान लो अब एक और था ऐसे 10⁵ तुम्हारी एक नोड के लिए 10⁵ पाथ्स बनी, राइट? 10⁵ पाथ्स,
10⁵ paths बनी. Then for each path we can say तो टोटल हो सकता है 10⁵ ऐसे पाथ. और हर पाथ में कितने नोड्स हो सकते हैं? 10⁵ I guess. So very bad space complexity. I guess क्या मैं कान से एल्गोरिथम यूज कर सकता हूँ? एट द एंड ऑफ द डे टोपोलॉजिकल सॉर्ट करने के बाद अगर किसी भी नोड में इन डिग्री बची, दैट मीन्स इट हैज, या किसी भी उसकी इन डिग्री अगर -1 हुई, लेट्स सी एक साइक्लिक ग्राफ में कान से एल्गोरिथम करते हैं तो क्या होगा? सो 0 1 2 साइक्लिक ग्राफ, राइट? इन डिग्री क्या होगी? 0 1 2, तीनों की 1 1 1. इन डिग्री 1 1 1, तो हम स्टार्ट ही नहीं कर सकते. वी कांट इवन स्टार्ट. तो इसमें मेरा आ गया. लेकिन मान लो अगर मेरा एक और होता -1, तो मेरा -1 से स्टार्ट हो गया, राइट? मैंने बोला अब 0 की डिग्री अब 2 है. तो 0 पे आया मैं. उसकी डिग्री 1 हो जाएगी, लेकिन वो क्यू में नहीं आएगा. आई थिंक कर सकते हैं. आई गोना ट्राई विद कांच से. सो सबसे पहले इन डिग्रीज निकालनी सकती, राइट? इन डिग्रीज इन डिग्री 0 into v for node in adjacency list. For next node in adjacency list of node, in degree of next node plus equal to 1. So I said q is equal to dq comma dq, right? For I in range v, if in degree of I अगर 0 हुआ, we can add in the q. Yep, we can add it in the q. Now I can say while q
node here to q dot top left for next node and node adjacent list of node in degree of this next node एक कम हो गई if ये जो in degree है अगर ये 0 है we can add it q dot append next अब if all in degree all मतलब सारी if not all सारी ट्रू है तो ये ट्रू देगा क्या एक भी ट्रू है क्या एक भी ट्रू है तो ये ट्रू दे देगा और अगर एक भी ट्रू हुई दैट मीन्स वी हैव टू रिटर्न ट्रू साइकिल है लेकिन अगर एक भी ट्रू नहीं था मतलब सब 0 0 0 है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा तो यहाँ पे सॉरी रिटर्न फॉल्स करना है अगर एक भी ट्रू हुई दैट मीन्स एक भी ट्रू हुई एक भी इन डिग्री अभी बची हुई तो ये ट्रू देगा ये पूरा फॉल्स देगा मतलब इसमें नहीं आएगा मतलब इसमें आया है तो एक भी इन डिग्री नहीं है दैट मीन्स साइकिल नहीं है एंड यहाँ पे यू कैन रिटर्न टू ओके इन डिग्री ओके लेट्स सी एंड ड्रॉप लवली आई मीन यस बिना कांच के तो ऑफ कोर्स आई डोंट थिंक सो अगर तुम ज़्यादा वेट कर सकते हो बट गुड क्वेश्चन अभी कांच से करना कांच ये फोर शेड्यूल टू तो ऊपर भी था ना तो फक इसमें था फोर शेड्यूल वो टोपोलॉजिकल सॉर्ट ही तो था so I can add one more for the cycle detection using Khan. Return true. तो सब सेम है मैं चाहता हूँ टोपोलॉजिकल सॉर्ट बना सकता हूँ बिना साइकिल क्या साइकिल है या नहीं है बस ये बताना है ना तो साइकिल है या नहीं तो आई कैन से define DFS node comma current if node and current return false
enough for next node in adjacency list of node. Do a DFS for the next node from a current, and यहाँ पे current dot add next current dot add node, and then current dot remove, and I have to say return true for the cycle. And यहाँ पे if अगर cycle हुई then we can just return true. नहीं पूरा हो गया and यहाँ पे I can add visited add node. Then I can say for I in E पहले visited बनाते हैं. Visited is equal to set if I not in visited do a DFS for the I and एक set दे दो current के नाम पे. अगर एक cycle बन गई we can return true वरना we can return false. इसमें उल्टा होगा. And then I can say adjacency list of is equal to default dictionary of list for u comma v and for u comma any pre v dot up cycle है. Hmm.
Oh.